Hi friends and viewers, I am Chef Tanzil. I make recipes from all parts of the world. Please do subscribe and hit the bell icon and don't forget to like. Thanks once again. आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल पास्ता आला नॉर्मा. It's not a regular pasta. Pasta can be made in different ways. So let's start. और हमें चाहिए कुक पास्ता, टमाटो सॉस, चॉप गार्लिक, ओरेगानो, बेसिल, थाइम, सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स. वेजिटेबल्स में हमें चाहिए डाइस कैप्सिकम, डाइस येलो कैप्सिकम, डाइस रेड कैप्सिकम, डाइस टमाटो, डाइस ऑबजीन एंड डाइस ऑनियन. In a pan, add oil. एक एक करके सारी सब्जियों को हम फ्राई करके अलग करके रख लेंगे. फ्राई इतना ही करना कि कलर उसका रिटेन रहे. ओवर फ्राई और ब्राउन तक नहीं रखना. जस्ट फ्राई एंड रिमूव इट टिल द कलर इज रिटेन. रेड और ग्रीन कैप्सिकम, जो हम इसको बेल पेपर्स भी बोलते हैं. ऑबजीन, जिसे हम इंडियन लैंग्वेज में ब्रिंजॉल भी कहते हैं, इसको भी वैसे ही अच्छे से फ्राई करके इसको हल्का सा थोड़ा ज़्यादा फ्राई करना, थोड़ा हल्का सा ब्राउनिश तक थोड़ा पक जाए. Now brinjals are golden brown. They are ready for you. Now you can start with your onions. बीच बीच में थोड़ा सा उसको हिलाते रहना है ताकि ऑनियन ज़्यादा पके नहीं. Now add the tomatoes. Remove the onion and tomato and keep it with all your vegetables. Keep it aside. In a separate pan, saute all your vegetables nicely. Add oregano, add thyme, add basil, add chili flakes, add the tomato concassee. टमाटो कॉन्कसी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. When you make at your home, it turns out amazing. इन सब को मिक्स करके अच्छे से सौते कर लीजिए. Add the tomato sauce. Add the al dente pasta. आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं,
Generally, to cook a pasta, we need 9 to 10 minutes. Al dant means just done. Or rest of the cooking of the pasta, when you saute it, it will cook on its own. Saute it nicely. This pasta has interesting twist of Italian vegetables. Your scrumptious, delicious pasta is ready to serve. So be with Chef Tanzil for interesting and unique recipes from all parts of the world. So be with Chef Tanzil.